Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have all of you over here. This is Friday at 4 and we are going to look at what's happening with markets, how it's going. Before we move on, I want to ask you all, how was the week? How is the Josh? Did you enjoy trading the market and did you enjoy looking at the moon? तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या आप मार्केट को देख के the Josh is high. I can clearly see that there have been so many comments that I am getting over here. I can see a very interesting comment. Anand Kumar Vesh, you are market king. Dil se salute hai aapko. Market is king, Anand. I am not market king. I am just a trader. I can say a mentor. Market is king, and I am just trying to understand what market does using various aspects. And Maheshwari, thank you very much for your fantastic words. And Lunar Cycle did the trick today. Absolutely fantastic. So I am going to ask all of you, how many of you were there with me on last Saturday webinar, which was happening on 29th of April. Last Saturday का एक webinar था time predict के ऊपर. Moon ho आप market के. Vinod Bagga, thank you very much. I'll ask my colleague to take snapshots of this chat because it's very, very impressive. I mean, I'm glad that people are able to make money out of that. And I can see so many of you were there in last webinar. Sunil Kumar was there, Hemant was there, and Mukesh was there. So many of you were there. And it worked like magic. To be honest, जो हमने बात की थी टाइम के बारे में, वेव के बारे में, everything is working like magic. यहाँ पर if you look at Aditi saying that made profit of 3 lakh plus this week, 3 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमाया उन्होंने 18,100 के कॉल पे और साथ ही में 18,200 के पुट पे आज के दिन में. फ्यूचर के मार्केट का बाप है सर आप. नहीं, कुछ नहीं. चलिए, ये सब चीजें तो चलती रही. मार्केट का प्रोबेबल सिनेरियो हम समझने की कोशिश करेंगे टाइम को देख के. तो हमने लास्ट वेबिनार में क्या डिस्कस किया था, पहले उसके बारे में बात करते हैं. हमने बात की थी डेट्स के बारे में. एक डेट बात की थी जहां से बैंक निफ्टी का मोमेंटम शुरू होना चाहिए, जो हुआ. दूसरी डेट की बात की थी हमने 5 मई को. जो रैली शुरू हुई है 5 मई को एंड हो सकती है. डू यू रिमेंबर दैट? ऑल्सो गोल्ड के बारे में हमने बात की थी कि गोल्ड बाय करना है. गोल्ड के बारे में भी हमने बात की थी. गोल्ड का टारगेट भी मैंने दिया था आपको कि वापस से गोल्ड 62 के जाएगा. ये भी वेबिनार में बात की थी हमने गोल्ड के बारे में. आपने सुना था उस चीज के बारे में. और गोल्ड का मूवमेंट देखिए, निफ्टी का मूवमेंट देखिए, टाइम देखिए, हर एक चीज एग्जैक्टली वैसे ही हो रही है जैसे उसे होना चाहिए था. गैन लेवल की बात की थी 18,293 था, मुझे शायद टच करेगा. ठीक है, लेकिन 18,267 के आसपास से घूम गया, चलेगा. नियर अराउंड लेवल्स तो आ गए गैन के भी. और साथ ही में अगर आप देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. आज का जो मूव था, बहुत सारे लोगों के लिए आज का मूव चक्काचौंध करने वाला था. ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट गिरना पड़ा. अगर मैं किसी को अभी जाके बोलूं ना कि लूनार साइकिल के कारण बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा है, तो वो हंसेगा, बराबर की नहीं, अगर मैं अभी जाके किसी को बोलता हूं तो. बट इफ यू आर, आई थिंक माय कलीग इज शेयरिंग अक्रॉस लिंक टू द रॉन्ग ऑडियंस, so can you please check? If you are here with me, you might have understood that this actually works because I told about it not once, not when the move has happened, but before, a week before the move has happened, I have talked about it. Okay, are you with me? Every one of you, are you understanding? सैटरडे को क्या क्या बात की थी कि लूनार साइकिल है, साथ में हमारे लूनार साइकिल के साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर टर्न होगा ट्रेंड. देयर आर सो मेनी चैट्स, आई एम गेटिंग लिटिल डिस्ट्रैक्टेड. I think Rani, you have shared across message to the wrong group. Can you share it to everyone, the link to invite your friends and family members, please? Your weekend session was fantastic. Minted 1,000 points in Bank Nifty put side and call side 400 points. Amazing. Amit Arora is saying, you mentioned about a pre-session video covering one page to buy out. Yes, you have not received that.
Amit, I'll check with my team. आपको क्यों नहीं मिला है वो pre-session video? You will be having it right away. So please make a note of this. And just one more moment. There are so many snapshots that my team has to take today. चलिए अभी I will be focused because I'm not sure why you people haven't received the pre-session video. So people from Master of Waves participant, tomorrow we are starting at 10 a.m. Ensure that our pre-session video agar nahi mila hai, so you just contact my colleague. She will help you up and set you up for this entire pre-session video, which you have to go through and by heart before tomorrow. So ensure that I'm going to thrill you with Elliott wave time cycle. But before that, you ensure you are doing all of those things. And एक और चीज, just a second, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंटली क्या है, देखिए मार्केट में जो न्यूज और इवेंट है, न्यूज और इवेंट विल फॉलो मार्केट मूवमेंट. इसका मतलब क्या होता है? न्यूज एंड इवेंट विल कम लेटर ऑन, बट द मार्केट विल मूव earlier. Okay, so you do not focus on the news or event, you focus on the market movement. It's very important that you focus on market movement. Abhi market mein, what is the possible path that we have to look at it? But before I move on to the possible path, I'm going to also share across very quickly yahan par something which has happened today. I'm not sure if you have been following me on the CNBC Awaaz, or if you are not following me, I just want to share that across with all of you. I won the Khiladi #1 show again, guys. This is the screen that I thought I'll just share it across. In this week, this is the third consecutive win on Khiladi #1, which means इसके पहले 2 हफ्ते पहले एक शो हुआ था, वहां पे मैं जीता था. उसके पहले भी शो हुआ था, वो भी मैंने जीता था. और ये वीक में भी मैंने जीता है. दिस इज द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वीक दैट आई हैव वोन द खिलाड़ी #1 शो, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू टू बिलीव इन टू दिस, बिकॉज विदाउट योर विशेस, विदाउट योर ब्लेसिंग्स, दिस इज नॉट पॉसिबल. लोग होता क्या है ना, जीतने के बाद बोलते हैं ये मैंने किया. मैं कहता हूं नहीं, ये आपकी विशेस, ब्लेसिंग्स, ट्रस्ट और आपके बिलीफ के कारण ये मैं जीत पाता हूं. बिकॉज it is just not easy for me to play this live without having confidence of so many followers that I have. We are almost touching 40,000 followers on YouTube. We are at 39,600 something. So YouTube people, are there on YouTube? Can you do me a favor? Can you like and let us reach that 40K? We will be touching 40K even on Twitter. So आपके जो, हमारा जो विश्वास है, जो आप लोगों ने दिखाया है, उसी के कारण ये सब चीजें पॉसिबल होती है. आई जस्ट वांट टू शो यू फ्यू स्टॉक्स which has helped me to make money in this week. Was RHM, Magnesia, Cochin Shipyard, Century Textile, Chambal Fertilizer, and this week was not easy. So it was very interesting. I'll be sharing these trading secrets tomorrow in Master of Waves session also. So just I can see Shared Traders is saying your time cycle shown on 3rd May, 11:15 bullish move on Bank Nifty. I cashed it, awesome, 140 points. That's fantastic. तो आज जो खिलाड़ी #1 जीता, so thank you everyone for your backing for me. अभी हम चलेंगे आगे क्या होने वाला है उसके ऊपर चलते. तो ये तो हो चुका है and won that, so really fantastic week. बाय मार्केट है. देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट में अगर आने वाले वीक में आपको प्ले करना है तो स्पेसिफिक स्टॉक्स में बाइंग करके पैसा बन रहा है. मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स आर स्टिल हैविंग दैट करंट, एंड आई थिंक नेक्स्ट 2 days मे बी वी विल करेक्ट. नेक्स्ट 2 days में मंडे को अराउंड 12:30, ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस टाइम, मंडे अराउंड 12:30 देयर इज अ टाइम साइकिल अगेन, विच मीन्स दैट मंडे अराउंड 12:30 को शायद हमें एक लो बन के पुल बैक आ सकता है. मैं पुल बैक का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से अभी 18,270, 240, 18,240 लेवल्स विल नॉट बी ब्रोकन फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days. That's what is looking like, basis of Elliott wave and time I am talking. So Monday around 12:30 we will have that pullback. That pullback will be very important because that will help us to
understand if today's fall was just a trap for bears or was it the start of a wave on the downside. Also very important, Bank Nifty is down by more than 1,000 points. When was the last time you saw Bank Nifty falling by 1,000 points in this entire up move? In neo wave logic, this is also a very, very vital information, because when you see a move of more than bigger than the prior legs, it indicates that something has changed in the market. And that's why it shows that the trend which started is now reversing back on the downside. I share across with my examples and charts, everything together. And I'm going to do that in a very short while. So just I'm asking you all, what do you think? I'm taking a very quick poll. What is the trend in the coming week for Nifty, you think? Before I start my view on Nifty, ये हम पे एक पोल लेते हैं समझने के लिए कि क्या आने वाले वीक में आपको ट्रेंड क्या लग रहा है. And people who wants to join me on Zoom and participate in this polling, please ensure you are doing that. I've shared the link of Zoom right now with all of you. Okay. आने वाले वीक में, that's very interesting. This is going to be a doji as far as I can see of it. Ayushi, great to see you again here. And I'm going to end the poll right now very quickly. Fantastic. So it is more or less doji with little bias on the downside, but लग रहा है कि आने वाले वीक में लोग confused है. That's a classic sign of a doji being formed on the market, which means इस मार्केट में फिलहाल 2 दिन के लिए कॉल बेच के पैसा शायद बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है. और ऐसा क्यों लगता है मैं आपके साथ में शेयर करता हूं मेरे चार्ट के पहले मैं शेयर करना चाहूंगा मेरा एक ट्विटर हैंडल जहां पे मैंने एलियट वेव के, सो दिस वेबिनार आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नियो वेव एंड लूनार साइकिल. But before that, I want to share across a chart which I have shown to everyone on over here. Just give me a second. बहुत ही अमेजिंग वे से ये चार्ट चला है, तो उस पे ध्यान देते हैं और देखते हैं वहां पर क्या लग रहा है हमें. ये ना मेरा ट्विटर हैंडल. आर यू एबल टू सी एवरी वन ऑफ यू? सो दिस इज द चार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड यहां पर अगर हम देखेंगे Nifty ka movement precisely as per this path is what has happened. You can clearly see that happening, and this is why I said that I'm just connecting my connector here. Okay, ठीक है. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे we completed this level. यहाँ से पुल बैक आया निफ्टी पे 18,200 के ऊपर. ये थोड़ा ब्लर है इमेज. Then right now we are moving down. But the problem is we have moved a much lower level. So this is wave 4. Wave 4 does not mean it will end here. Wave 4 can also go and end here much lower. So I think we are headed towards 17,960 down. Post that we will have wave 5 on the upside. Post that we will have wave 5 on the upside. That is how it is looking like to me. Are you clear about it? तो अभी हम जाके देखेंगे चार्ट के ऊपर कि इसे किस तरीके से हमें देखना है और कैसे इसे प्लॉट करना है. सो लेट मी ओपन अप माय चार्ट वेरी क्विकली. 1 second. This is on my Twitter. So guys, just ensure you are following me on Twitter, because I keep doing a lot of just such posts. And let me now go on. This is as per Elliott wave I talked about. I'm now going to talk about Neo wave here. Okay, shall we move on to Neo wave, guys? Everyone. So ये जो चार्ट आप देख रहे हैं नियो वेव के हिसाब से प्लॉट है, ये अभी का नहीं है. I have plotted this chart much earlier, even before the third started on the upside. ठीक है? Are you able to see this over here? Everyone. Now this is the wave count that I am seeing as per Neo wave. So यहाँ पर ये हमने बना रखा है overall pattern. This is how it is looking like. Possibly, I think this is a third extended. This can be possibly a third extended ending diagonal pattern जो हम Neo wave में बोलते हैं. So that's the possible path we can see over here. All of you, are you able to see my screen? I just wanted to check if you are able to.
See my screen over here? Okay. So यहाँ पर अगर आप देखोगे, shall I start from the bigger count first? Bigger count देखते हैं पहले, फिर छोटे count पे आते हैं. बहुत detail में we will see, and I'm going to keep it very simple for all of you. So if I go to the daily time frame chart, okay, over here you can clearly see these are all the, this is a 55 days time cycle that we have plotted. This is the move which was there on the upside in the form of wave A. This move on the downside is in the form of wave B. And this is the C leg which is going on. Okay. Now, this entire pattern from here can be in the form of a flat correction, or it can be form of a triangle pattern, or new extracting triangle pattern. It can be anything, flat or triangle, though possibility hai. Now, shall I prefer flat? Yes, because wave B has consumed a lot of time compared to A, and it is not very sharp, fast. So ideally, C जो बन रहा है वो impulse होना चाहिए in case of a flat pattern. Flat pattern होता क्या है? So I'm preparing people, participants from Master of Waves. You should be attending these webinars because this will prepare you for tomorrow to some extent. Flat pattern होता है 3 waves up, 3 waves down, 5 waves on upside. That's a flat pattern, or 3-3-5 kind of a pattern that we see. Okay. So which means wave A will be corrective, B will be corrective, and C will be a impulse pattern. Now, as per Neo wave rule, this is C lag. In this case, this is 1, this is 2, and the third is going on. As per this scenario, wave 2 in Neo wave 2 should take more time than wave 1. Wave 2 को wave 1 से ज़्यादा time लेना चाहिए, which is this candle. Did it take more time than wave 1? I'm asking you. क्या wave 2 ने यहाँ पर ज़्यादा time लिया wave 1 के सामने? नहीं. Wave 2 ने ज़्यादा time नहीं लिया. तो मतलब एक possible scenario open हो जाता है कि wave C जो बन रहा है शायद वो terminal impulse pattern बन रहा है. Okay? Terminal impulse pattern का rule क्या है? Wave 2 can take lesser time and wave 4 should overlap. Okay, this is 1, this is 2, this is 3rd, 4th, and this is currently 5th. This wave 4 should overlap with wave 1. That is the rule as per the, let me just label it here, as per the terminal impulse pattern. So this is going to be 1 here, this is going to be 2 here, and this is the third, which is currently possibly over. Okay, and we are right now starting with 4th wave, which will overlap with this, and यहाँ से फिर हमें आएगा 5th wave. That's the preferred scenario looking as of now. Okay, this is where we are as of now. So हमारा GPS क्या बता रहा है कि हम अभी फिलहाल कहाँ पर है मार्केट में? That's the GPS. So this was the flat corrective pattern, and where do we stand as of now? And this is where we are. So इसका मतलब हो सकता है 2 से 3 दिन में हम 17,860. Okay, I am referring to a normal impulse pattern, terminal impulse pattern here, which means that we should see an overlap with 17,860 levels over here. 17,860 levels के साथ हमारा overlap होना चाहिए. Are you understanding? So I am talking about very clearly Neo wave terminal impulse pattern is suggesting that we should overlap with 17,860 levels on downside, which is also top of wave 1. Okay, everyone clear है? Now यहां पर अगर ये होने के बाद में, यहां पर ये होने के बाद में 5th wave की शुरुआत ऊपर होनी चाहिए. That is what we can clearly make sense. Only if it is the 5th wave on the upside will confirm only once we see a dip towards this level. Now with this information, shall we go on a smaller time frame chart and look at it? Okay,
So I'm going to go on 1 hour chart now and look at this picture in a much detailed fashion. ठीक है, यहाँ पर अभी ये जो वेव सी था, हम थर्ड था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 0.618 टाइम्स ऑफ वेव 1 होना चाहिए, लेकिन वो बड़ा हो गया. कितना बड़ा हो गया वो प्रेशर करके देखते. तो वेव एक्सटेंशन में यहां से लूंगा and I will measure this extension right from the low here, and I can see that this wave third is 76.4 times, nearly 76.4 times of wave 1. So now I am going to make a note here that wave 3 is equal to 76.4 times of wave 1. As per this logic, now हमारा पाथ क्या होना चाहिए, ये अगर मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर, और ये हो जाएगा वेज शेप का पैटर्न. ओके, ये आ गई मेरी एक और लाइन ओवरलैप वाली. तो मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज प्लीज कीप इन माइंड, दिस इज फॉर पीपल हु ऑलरेडी नो वेव थियरी टू सम एक्सटेंट, अदरवाइज यू माइट बी थिंकिंग यार ये चल क्या रहा है. ओके, so that's the move here. and यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पॉसिबल है कि हम यहाँ पर ओवरलैप होगा. so this is where we should overlap. Post this overlap, so this level becomes 17,860. then we might have another leg on the upside. so we are keeping a very close watch. This will become fourth, and then this will become fifth. So that's my path of Nifty as of now. That is how the path is looking as of now. 860 to break होना चाहिए, which is mandatory if this happens. So right now दोस्तों, this is just a possible scenario. What is important for me apart from this is that this path has to be also in sync with my time. So price or time ka synchronization is very, very important. Keep that in mind. How will time get synchronized now? Let me talk about time. Okay. Now time, and there are many chats. I'm sorry for not being able to check and respond to you on the chats because I'm getting a little distracted. That's why I'm not able to check it. I just want to be focused right now what I'm talking before I forget. Time ke hisab se, so this is terminal matlab ending diagonal pattern in Elliott wave terms. So terminal impulse as per the GPS. So I call it as a GPS. Now as per time, my important time is 12:30 p.m. which is on Monday. Can you tell me the date on Monday? Monday will be 8th of May. Okay, that's the date on Monday, 8th of May. And I am going to also referring to this time to see how prices behave around 8th of May, 12:30 ke aspas. If the time results into a strong up move, which means that there is an extension on the upside. If the time results only onto the downside, matlab pullback, if the time results only onto the pullback, okay, then I am going to be looking at that aspect of time as an element to sell on Monday. I don't want to confuse you. What I am telling you, if 12:30 के बाद में निफ्टी में अच्छा रैली हुआ, आवरली क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर हुआ, डेली ट्रेंड चेंज हो गया, then I will refer to it as a good upward move continuing. लेकिन अगर 12:30 के बाद मंडे को खाली पुल बैक आया और फिर से लो ब्रेक हो गया, which means my this scenario continues to be intact. Also, if wave 4 overlap हो गया 1 के साथ, अगर निफ्टी 17,860 आ गया तो यही एक सिनेरियो है जो वैलिड है. अगर निफ्टी 17,860 मंडे ट्यूसडे तक नहीं आया और फिर से रैली ऊपर हो गई, which means I will turn super bullish. So Monday and Tuesday are the most important aspect for me to take a medium term investment decision. I am again explaining why. If this overlap happens, which is keeping the terminal impulse possibility open,
which means that post the C wave completion, there is going to be a disaster. If the overlap does not happen at 17,860 and stocks start busting up again, then I will be super bullish, expecting market to touch new highs. So for me, the deciding factor is going to be 17,860 levels, which I am going to keep a close watch on that level. Are you with me? लूनार साइकिल पे चले अभी. इसके बारे में अगर आपको नहीं समझा है, so you need to be a part of the Master Awaaz session, which is going to happen tomorrow, day after, where we will be discussing this in much more refined and detailed fashion. ठीक है, तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही से समझो, लॉस ना करो मार्केट में. अभी मैं चलता हूं आप लोगों को लेके लूनार साइकिल पे. बहुत टाइम से हमने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग है बेसिस ऑफ द लूनार साइकिल. सो आई एम गोइंग टू let me open up another window, another layout where I can actually talk about lunar cycle in a much detailed fashion. So let me just save this across first and go to another layout. Yes, today's close is actually towards the low of previous day. So I was keeping a close watch, Nilesh, ऑन की आज का क्लोज निफ्टी का कहां पर होता है. तो प्रीवियस लो था 18,066, निफ्टी का क्लोज है 18,069. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Nitesh Pathak is saying, sir, I noted your dating strictly in notes in last webinar, full time watching it with the market, and it is magically worked. Thank you, Nitesh, for that. I am sure you are able to do that. And agar aap are there participants from option trading program? Are you using KST with bands and Ichimoku? देख रहे हो आप लोग क्या मैजिक है यार वो फॉर ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग. अगर आप कर रहे हो वो KST को और उसके साथ में अगर आपने बैंड कंबाइन किया है और इचिमोको कंबाइन किया है, इट इज वर्किंग लाइक मैजिक. आई थिंक पोस्ट OTTA सेशन एक भी बार उस मेथड पे स्टॉप लॉस शायद एक आध बार हुआ होगा, बट आई डाउट कि उसके अलावा एक भी बार ऑप्शन बाइंग में स्टॉप हुआ. बाइंग की बात कर रहा हूँ, वो इतने अच्छे से चल रहे. This we did in, so someone is asking, this we did in option trading using technical analysis, the BMW program, the combined options and master Awaaz wala piece. So I'm now going to put on the indicator of moon cycle. यहाँ पर आ गए हम मून के ऊपर और देखेंगे मून साइकिल के बेसिस पे कैसे हम देख सकते हैं क्लियरली. बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का फेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ओके, इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट द मून साइकिल आल्सो ऑन द लास्ट वेबिनार, which was an exclusive webinar if you were a part of it, and if you were able to see over here, this was the date when the market reversed down. So usually this is acting as a reversal. This was the date. So this is a new moon, or you can say no moon or Amavasya. The lower one is a full moon. Okay, this is a full moon cycle. Now after this, if you're looking at the current one, okay, if you're looking at this cycle, the trend reversal is happening. So the full moon also resulted into a down move. यहाँ पर से भी डाउन मूव था, यहाँ से अप मूव आया. In fact, on CNBC Awaaz during my interview, I talked about this lunar cycle. मैंने तो ये भी कहा कि यार मैं भी विश्वास नहीं करता था इस पे, लेकिन जो ट्रेंड शुरू हुआ वो अमावस्या के नेक्स्ट डे से शुरू हुआ, which is this one, एंड जो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है वो पूर्णिमा के दिन से रिवर्स हो रहा है. सो दिस इज वर्किंग लाइक सुपर. तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज टुडेज मूवमेंट एंड दिस इज फुल मून. Okay, are you able to see this, everyone? So if you are looking at this entire cycle, lunar cycle is now suggesting that the
high of today in ideal case scenario should be protected for next 2 to 3 days. इसका मतलब कैसे ट्रेड निकालेंगे? आई एम आस्किंग यू. अगर लूनार साइकिल इज नाउ सजेस्टिंग दैट द हाई फॉर टुडे शुड बी प्रोटेक्टेड for next 2 to 3 days, what do you think should be the strategy? Can I say the strategy should be sell calls option? Rashmi, you mistaken it for put. Sell call option. अगर निफ्टी का हाई निकल गया ये और आज का और कल के दिन का, market is super bullish. I'm telling you. Okay, if Nifty takes out the high of today and yesterday, which is if it takes out the high, आज का हाई क्या था देख लेते, लेवल्स ही लिख लेते ना, जिससे याद नहीं रखना पड़े आपको. आज का हाई था 18,217, मतलब 18,220 एंड 18,270, ये दो लेवल है. सो 18,220 एंड 18,270, if these two levels are taken out in next 2 days, market will be super bullish. Are you with me? If these two levels are taken out in next 2 days, market will be super bullish. नितेश पाठक से पूर्णिमा की आंधी सब उड़ा ले गई. बैंक निफ्टी तो 1000 पॉइंट गिर गया बिल्कुल. एंड यहां पर क्योंकि लूनार इफेक्ट नहीं हुआ, वेव के हिसाब से भी थर्ड एक्सटेंड हो गया, विच मीन्स बहुत सारी चीजें चेंज हो गई. तो ये दो लेवल अगर इंटैक्ट है तो कॉल ऑप्शन सेल करने का टाइम आ चुका है. अगर आज बेचा नहीं है तो मंडे 12:30 के बाद पुल बैक के बेसिस पे आप ऑप्शन सेल कर सकते हो. क्लियर है? सो द लूनार साइकिल इज इंडीड वर्किंग लाइक मैजिक बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ लो एग्जैक्टली ऑन दिस डे एंड इट इज फॉर्मिंग अ टॉप ऑन दिस डे. इट वर्क्स. एंड मैं नहीं कह रहा, देखो आपकी आंखों के सामने ये जो सर्कल्स है खाली आप उसे देखो. यहां पर लो बना, यस. यहां पर टॉप बना, यस. यहां पर लो बना, यस. यहां पर टॉप बना, यस. यहां पर एक दिन बाद टॉप बना, बिल्कुल. यहां पर टॉप बना, यस. ये लो, बिल्कुल. एक दिन बाद लो बना, यस. यहां पर टॉप बना, लग रहा है. क्लियर है? मतलब लुक एट द एंटायर movement on lunar cycle. You think it doesn't work? I don't care what everyone thinks. Is it lunatic? बोलते हैं ना यार, सोम रस भी कहा जाता है. मून को सोम क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हाइटन्स एवरीथिंग, राइट? इवन द वेव गेट हाइटन्ड बिकॉज ऑफ दिस एंटायर moon lunar cycle. So it heightens everything. If you are very sweet, you will get more sweeter. It sweetens up. If you are nasty, you will get more nastier. It heightens whatever is the nature. That's a natural phenomenon of lunar cycle. And it's a 28-day complete end-to-end cycle. यहाँ तो हम 14 days का देख रहे हैं because अमावस्या to Purnima to अमावस्या, it's a complete one cycle of 28 days. Now, in this 28-day cycle is already governed by the female body, right? 28 days पे exactly ये only because they are following a 28-day period we exist. नहीं तो we wouldn't have existed on this planet. So something which is impacting the human system to such an extent, don't you think stock market है क्या ultimately? हमारा thought process, crowd psychology, perception, उसी का तो फंडा है. People get lost into promoter is moving, operator is moving. I'm saying you, whatever you think they are moving, they are also governed by the same cycles like we are governed. Look at the charts, not what they are trying to do. You will get answers on the charts. And if that is the case, we can see this lunar cycle working exceptionally well. There is a quadratic cycle of 54 years. There is a solar cycle of 12.5 years. There is a lunar cycle of 28 days. There is a decennial cycle of 10 years. There is a presidential cycle of 4 years. There is a kitchen cycle of 8 years. There are these cycles acting across on stock markets. And we need to identify which time is acting on the market. If you identify it correctly, it works like magic. If you identify it wrongly, this is pseudoscience. You need to pick up whether you are identifying it correctly or not. Don't blame the study, blame the market, but try to take ownership and responsibility
whether you are applying it correctly or not. For me, it is working, and that's what I am sharing across to all of you. अरे ये तो चलते आ रहा है, ये तो खाली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो ये तो मैंने आपको खाली टाइम के बारे में बताया है. बहुत टाइम से हमने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि वेव थियरी बहुत अच्छे से चल रहा है फिलहाल. तो हम इसलिए मून साइकिल के बारे में बात नहीं कर रहे. बट आई जस्ट शोड यू द साइकिल ऑफ मून्स एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. Isn't it wonderful? Isn't it wonderful how you can use these concepts? और सोचो ना, अगर ये नहीं चल रहा होता तो ट्रेडिंग व्यू में इसका एक इंडिकेटर होता क्या. सोचने वाली बात ये है कि अगर ये चीज नहीं चल रही होती, ये इंडिकेटर बनाया किसने? मैंने तो बनाया नहीं, मैं तो खाली अप्लाई करके देख रहा हूं. विच मीन्स जिसने ये इंडिकेटर बनाया उसने वही पर्सपेक्टिव से बनाया है कि ये चल रहा है. आर यू विथ मी? है ना इंटरेस्टिंग चीज. तो there are people who sees the glass half empty. I see the glass full. So it works, right? It works like magic. So next date कब है लूनार साइकिल की? कोई बताएगा? आज तो हो गया शुरुआत, अभी नेक्स्ट लूनार साइकिल की डेट कब है वो ऑब्जर्व करिए. एक ऐप मैंने तो डाउनलोड कर रखा है लूनार साइकिल का, जिससे पता चलता है कि भाई कौन से डेट पे अमावस्या है, कौन से डेट पे पूर्णिमा है, कहाँ पर क्या हो रहा है. वो सब चीजें देख रहे हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. 12th में नलिनी, थैंक यू वेरी मच. 12th में को है सुभाषिनी सिंह 19th में. सो दोस्तों अभी मून के ऊपर अमावस्या कैसे दो अलग डेट पे हो सकती है? या तो 12th होगा या 19th होगा. 12th तो हो नहीं सकता क्योंकि आज ही 5 तारीख है, तो 19th होना चाहिए आइडियल के सिनेरियो में. बराबर है? ओके, इट इज 19th. ओके, 19th इज अमावस्या. सो वी विल सी हाउ इट स्पेन्स आउट फ्रॉम हियर टिल देन. बट वो देखेंगे हम. बिफोर आई मूव ऑन टू कंक्लूडिंग दिस, very quick, very quick, I want to remind all of you, are there people from Master of Waves app name? Just share across my app link to all of you so they can download the app. And people on YouTube, do subscribe to the channel. Do like and comment there so that मुझे पता चले ये videos आपको useful है. And we will be touching 40,000 very soon on YouTube. So are you the one to take me there so that I keep publishing these videos? So fantastic. Dhananjay is registered for BMW. Vandana, Kaushik, I know you. Of course, Akash, I know you. Sanjeev, you are there. Fantastic. So just for people who are there, who have registered for the BMW program, for you very clearly, just keep one thing in mind. We will start at 10 a.m. tomorrow. These 2 days of Master of Waves are going to be amazing. If you are a mentee, of course, you will be a part of the Master of Waves already. You will love what we are doing, but it's going to take time. It's not going to be immediate like option trading program जो हमने किया था. Option trading program का fun क्या था? आप immediately next day से KST, bands, सारी चीजें अप्लाई करके पैसा कमा सकते हो. वेव थियरी का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा. तो आई वांट टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशन. इट्स इजी, but it will take a little more time than what we did in option trading. That's why we say to do a complete BMW, because then you know everything very easily and step by step. Secondly, pre-session video हर एक जन को दिया जाएगा. अगर नहीं मिला है तो please contact my team on the number they will share across, 9920422202. Just contact करिए and you will get the pre-session video of Elliott Wave. लिंक्स के साथ में Elliott Wave की लिंक मिलेगी, साथ में pre-session video भी मिलेगा. अगर आपको नहीं मिला है for whatever reason, go through that. आज रात जागना पड़े तो जागिए, लेकिन go through that video of 5 hours, 6 hours, so that your learning can be at a different level. Those are only for participants of Master of Waves or BMW or mentees जिनको ये videos दिया जा रहा है. So not for everyone else. Congratulations for Khiladi number 1. Thank you for that. Next, I'm going to start with a step-by-step process on impulse pattern, corrective pattern. We'll look at Hurst time cycle, and we also go to Gann square of 9. So we will be covering all of these aspects. It is from 10 a.m. to 4 p.m. There will be break of in between on both the days. Recordings will be given to each one of you. So do not worry about that. I'll be giving you the recording also. So just keep that in mind. You will have that recording.
Plus there will be a follow-up session which we are going to have. Plus you will be posting your queries and doubts to me. So what I am trying to tell you is that I'm creating this entire ecosystem for all of you who are either a mentee or a participant of BMW or Master of Ace. So just ensure that you do your homework that I am telling you, so that I can then you can make the most of it. Also, we will be forecasting market right from 1 day to 1 year to 5 years down the line. हम साथ में करेंगे वो चीज, ठीक है? और इसके साथ में you will get a specific trade setup on wave theory and Ichimoku को combine करके कैसे options के ऊपर buying selling strategy बना सकते हैं, वो trade setup मैं आपको देने वाला हूँ. Is it clear? Every one of you, are you all excited? There are so many of you who are excited about this program on BMW. I'm just taking a quick poll. Meanwhile, I'm open for questions. Was the session interesting today? What we did it in a very detailed fashion. Oh wow, mera interesting. Okay, so I'm just taking a very quick poll. I'm not sure, it's not allowing me to launch my poll. I'm just checking if it is there. Okay, I'm open for questions. And also one more very important thing, guys, that you should be aware about it. Let me just check. That's weird. That's technology, right? It's not allowing me for launching any poll for that matter. That is okay. I'm sharing the existing poll. That's why it was not allowing me. I got it now. Okay, so are you able to see this poll now? Okay. Okay, yeah, you are. Nilesh Pawar, you would like to be a part of Master Wave? Of course. You can be a part of Master Waves. Don't have to ask me. You are my first mentee. Okay, Nilesh. So it's always fantastic to have you on board. Okay, there is a question here. Sir, I want to know more about Lunar Cycle. देखिए लूनार साइकिल के बारे में आई नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द लूनार साइकिल हियर. इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कल परसों में. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड व्हाट वेव आर वी इनटू राइट नाउ? वी आर इनटू द थर्ड वेव, पॉसिबल फोर्थ स्टार्टिंग, ऐसा लग रहा है देख के. मंडे 12:30 इज गोइंग टू डिसाइड फॉर मी इफ द फोर्थ इज इंडीड एंड गोइंग ऑन और द थर्ड इज एक्सटेंडिंग फर्दर. सो बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का 12:30 वाला टाइम जो आपको नोट करना है. ओके, एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर. लेट मी जस्ट टेक अप दैट. व्हाट अबाउट गोल्ड? आई एम बुलिश ऑन गोल्ड. Whatever people say, I'm still bullish on gold. I think gold has much more levels to achieve. 62,000 का टारगेट है जो मैंने पहले भी कहा था, वेबिनार में भी कहा था. गोल्ड का हाई कितना बना? I haven't seen it today, so I don't even know what's the high of gold. Crude will be stuck in a range. That is how I'm looking at it. Okay, there is a question here again. Amit is saying I don't have sufficient sense on options. So don't worry, Amit. हम वेव थियरी कर रहे हैं. अगर आपको ऑप्शंस नहीं भी पता है, so wave theory you can apply it on stocks, or if you want to know options also, then you can check for the BMW program. Gold already touched 62,000 yesterday. Gold dollar high, yes. 62 का मेरा लेवल्स है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, जो मेरा टारगेट है. लेकिन मैं टारगेट पे एग्जिट नहीं कर रहा बिकॉज आई एम ट्रेलिंग माई एवरीथिंग. सो गोल्ड का हाई 62 तो नहीं आया है जहां तक मुझे पता है. दोस्तों क्या इतना डिफिकल्ट है? लेट मी चेक अप ऑन माय ऐप कि गोल्ड का हाई कितना है. मतलब इतना तो क्लियर होना चाहिए ना यार. सबके डिफरेंट लेवल्स कैसे आएंगे? गोल्ड के ऊपर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट चेक करो, उसके ऊपर से आपको चार्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि भाई गोल्ड का हाई क्या है. गोल्ड का अभी चल रहा है 61,271 और गोल्ड का जो हाई लगा था कल के दिन में वो बना था हाई 61,845. दैट्स द गोल्ड लेवल. सो 62,000 का टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है. बहुत ही फैंटास्टिक है. और वेव थियरी इतना नहीं समझ में आया अभी, तो सीखा ही नहीं है तो समझेगा कैसे? कल परसों हम करेंगे, उसमें सीखेंगे. ओके, सो गोल्ड के बारे में मैंने बात की है. व्हाट इज द लेवल ऑफ फॉर सुपर बुलिश इन निफ्टी? अगर निफ्टी मंडे या ट्यूसडे को 18,270 निकाल देता है, इट्स सुपर बुलिश. आई एम गोइंग टू बी सुपर बुलिश. इफ दैट हैपेंस,
Monday or Tuesday as per time. Praveen is saying you are my favorite teacher. Thank you very much. So do share across these webinars if that's the case and it helps everyone to learn. 2025 का टारगेट हम गोल्ड पे निफ्टी पे करेंगे वेव थियरी में. Natural gas, I have to check that time cycle on weekly, I know, and not on the short term. Okay guys, I think wow, 45 minutes हो गया. मालूम है आपको, मुझे लगा 15 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को लगा होगा शायद बरसों से बात चालू है. अगर आप बोर हो गए होंगे तो खत्म ही नहीं हो रहा है वेबिनार, ऐसा लग रहा था आपको. Anurag Charodia is saying, I'm an ardent follower of your tweets. You are genius. Thank you. Thanks very much. And I am glad that the tweets are helping you all. Jate jate, finally, I just want to again share across my screen of CNBC win. I won on CNBC Khiladi #1, guys. Thank you very much for your belief, your, you know, everything that you thought wouldn't कि ये नहीं possible है wave theory के साथ, लेकिन आप लोगों के सामने ये proof है. So thank you everyone for believing into this. Wouldn't have been possible without your wishes and blessings again. This was the consecutive third win on Khiladi #1. Ashish Kyal signing off, क्योंकि कल परसों के लिए मुझे मेरी आवाज बचा के रखनी है, इसीलिए तो कल परसों हम वापस से मिलेंगे. 6 घंटे का सेशन है और बहुत इंटरेस्टिंगली बातचीत करेंगे. And do ensure you are following me on Twitter, following me on YouTube, and downloading my app. App download करना ना भूलिए. Ashish Kyal Trading Gurukul app है. और if you have any query, any help required, just feel free to be associated with my Gurukul any point of time. Thank you very much. Nitesh Pathak will be signing in for mentorship. Fantastic. Next 3 months mentorship, Anurag, last question, next 3 months mentorship. Okay, so the mentorship is now going to be happening in June. If you are enrolling for mentorship now, today, then you are going to attend the live session of Master of Waves tomorrow. Plus you will have access to option trading ka recording jo hua tha. Plus you will be a part of Master of Cycles, which is going to happen in June. Plus your mentorship will then start, which means your learning starts from today itself with access to Elliott wave. That's how the mentorship is going to be spanning out for the upcoming one. The existing mentees, I am anyways. So हमारा live trading था. किसी ने stock track किया जो हम अभी तक hold कर रहे हैं. Mentee, Rashmi, are you there? You took that position. Are you still holding that? So fantastic. I'm not commenting on specific stocks right now. Rahul Katyal is saying your tips are quite accurate. God bless you. Biggest testimony is today's lunar cycle move. Thank you. Okay, so Rashmi will discuss the strategy around how to trade those stock and why it's time to maybe partial broke profits on the stock in the Telegram mentorship Telegram group. Thank you for everyone for joining in, and I'm signing off now. Thanks a lot.